Ladies and gentlemen, good day and welcome to the Bright Outdoor Media Limited Q4 and FY'25 earnings conference call. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star then 0 on your touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. Before we move on to the conference, I would like to give a cautionary statement to all the participants. This conference call may contain forward-looking statements about the company which are based on beliefs, opinions and expectations of the company as on the date of this call. These statements are not the guarantees of future performance and involves risks and uncertainties that are difficult to predict. I now hand the conference over to Dr. Yogesh Lakhani, Managing Director of Bright Outdoor Media Limited. Thank you, and over to you, sir. गुड आफ्टरनून, जय जिनेन्द्र। मैं डॉक्टर योगेश लाखानी, सीएमडी ऑफ ब्राइट आउटडोर मीडिया से बोल रहा हूँ। मैं आपको मेरे ब्राइट की और अबाउट मेरी जर्नी के बारे में 5 मिनट के लिए 0 से हीरो की स्टोरी बताना चाहता हूँ। मेरा बर्थ एक छोटे से परिवार में हुआ है। मेरे मम्मी पापा एकदम मिडिल क्लास थे और जब मेरा बर्थ हुआ तभी मेरे को हॉस्पिटल से छुड़ाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। इसी सिचुएशन में मेरी जर्नी लाइफ की चालू हुई है। हम लोग एक छोटे से मलाड़ में 10 बाय 10 की गली में रहते हुए मैंने लाइफ धीरे धीरे करके आगे लाया और मैं जब 6th स्टैंडर्ड में था तभी मेरे डैडी को सीरियस हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा था। तभी मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं बहुत रोया था और बहुत तकलीफ में था। तो मैं सोचा क्या करूँ, तो तब से मैंने एकदम सॉलिड डिसीजन लिया कि मैं कैसे भी करके घर का सहारा बनेगा और पैसा कमाएगा और जीवन में मेरे सब रिलेटिव सब बहुत बड़े लोग थे और मैं भी बड़ा आदमी बनेगा, ऐसा मैंने ड्रीम देखा था। और वहाँ 6th स्टैंडर्ड से मैंने रोड पे न्यूज़पेपर बेचने का, माचिस बेचने का, पटाखे बेचने का, छोटे छोटे काम जो बच्चे कर सकते उस तरह के काम मैंने किए। ऐसे धीरे धीरे करके मैं 7वीं 8वीं में भी ये सब काम करता था। पढ़ते पढ़ते मैं एसएससी तक आया और जब मैं एसएससी की एग्जाम देके घर पे आया तो मेरे आंटी मेरे घर पे बैठे थे और मेरे अंकल का एडवर्टाइजिंग कंपनी थी, सिनेमा एडवर्टाइजिंग की। तो उनका एक प्यून आउट ऑफ मुंबई छुट्टी पे गया था हॉलीडे पे, मई महीने की 4 तारीख को, और मेरी स्कूल की छुट्टी हुई थी। तो मैंने सोचा कि मैं काम करूँ और अर्न कर लूँ। तो मैं 1 महीने के लिए फ्लाइट डिलीवरी बॉय करके मेरे अंकल के वहाँ काम पे लगा। और जब उनका आदमी आ गया तो अंकल ने बोला अभी बेटा तू पढ़ने को जा, मेरा आदमी आ गया तो तेरा अभी पढ़ाई कर। तो मैंने बोला पढ़ाई करने के लिए तो पैसे की तकलीफ हो रही है और फैमिली को भी मेरे को सपोर्ट करना है, तो मैं कुछ काम करता हूँ तो मैं आपको बिजनेस ला के देगा, आप मुझे कमीशन देना। और तभी से मैंने अपना खुद का बिजनेस का एक सोचा। और जब मैं घर पे चल के आ रहा था तो रास्ते में एक ब्राइट गारमेंट करके मैंने पढ़ा। तो मैंने मेरी लाइफ में ब्राइट नाम बहुत मुझे अच्छा लगा, तो मैंने ब्राइट एडवर्टाइजिंग करके नाम चालू किया। और पहला महीना 2 महीना कुछ काम नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं आ रहा और मैं स्टार्टिंग में दिन में मतलब रेगुलरली काम करने लगा, सुबह में 9 बजे से रात को 11 तक। और ऐसे धीरे धीरे काम करते करते लोगों को मेरे पे विश्वास आ गया, अच्छा लगा। तो मैंने 1980 से लेकर 83 का सिनेमा एडवर्टाइजिंग का, फ्लाइट का सब काम किया। उसके बाद रेलवे प्लेटफॉर्म बोर्ड और न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग और छोटे छोटे रोड पे बैनर्स लगाने का, शटर पेंटिंग का और एडवर्टाइजिंग का छोटे छोटे धंधे चालू किए। और 85 में मैंने थोड़े से बड़े पैमाने में काम स्लाइटली थोड़ा बड़ा मतलब चालू किया। और 87 में मैं बाजू में एक माणिक चंद जो फिल्म फेयर स्पॉन्सर करते हैं उसके डिस्ट्रीब्यूटर रहते थे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे जो अवार्ड है फिल्म फेयर अवार्ड उसमें तो ये मेरा ब्रांडिंग करके देगा, माणिक चंद का बैनर लगाने का, टेबल का काम। तो मैंने बोला यस। तो तभी मैंने लाइफ में पहली बार सब सुपरस्टार और फिल्म स्टार और लोगों को देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। उस टाइम पे मैंने फिल्म की पब्लिसिटी का काम के बारे में सोचा। और वो उस टाइम पे लोग रोड पे सिर्फ होर्डिंग लगाते थे, रेलवे पे लगाते नहीं थे। तो मैंने एक स्कीम निकाली 50 होर्डिंग 2,50,000 रुपए में, तो फिल्म लाइन में बहुत हिट हो गई। और उसी टाइम पे सब सुपरस्टार का स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा था, तो मैंने सबको मदद किया और सबके लिए काम किया। और धीरे धीरे 1987 में मैंने छोटे से एक गैरेज में ऑफिस ली 250 फुट की। फिर धीरे धीरे टेंडर आने लगे, छोटे छोटे टेंडर लेने लगा। फिर मैंने पहला लाइफ में मेरी मम्मी से थोड़ा पैसा मांगा, 1,00,000 2 लाख रुपया, तो उन्होंने ऐसे इधर उधर से उधारी लेके दिया और मैंने मलाड सरकारी बैंक से 5 लाख रुपए की लोन लेके अपना काम चालू किया।
ऐसा धंधा बढ़ाने के लिए मैंने ऐसा फाइनेंस पहला स्टार्ट में लाइफ में किया। और मेरे जो क्लाइंट लोग थे मुझे बोलने लगे कि ये होर्डिंग भी लगा के दे प्लेटफॉर्म के बोर्ड के साथ। तो मैंने उनको सवाल पूछा कि होर्डिंग मतलब कि आज मैं होर्डिंग इंडस्ट्री का बादशाह हूँ, लेकिन मैंने होर्डिंग का एज भी नहीं मालूम था। तो उन्होंने बताया कि जो बड़े बोर्ड लगते हैं एकदम बड़ी साइज के होर्डिंग जो स्ट्रक्चर लगता है उस पर लगता है। तो उस तरह से मेरे होर्डिंग की जर्नी चालू हुई। फिर धीरे धीरे करके मेरा नाम काम, मैं दिन का 365 दिन में 150 दिन फुल नाइट काम करता था। 100 दिन खाना खाने को टाइम भी नहीं मिलता था, पैसा भी थोड़ा कम मिलता था। इस तरह से लाइफ का स्ट्रगलिंग करके 1995 में थोड़ा स्ट्रगलिंग से बाहर आया और थोड़ा अच्छा धंधा हुआ, कॉर्पोरेट लोगों के काम मिलने लगे। और 2000 के 7 साल के बाद मेरा सितारा अच्छा हुआ, तो बहुत बड़े पैमाने में काम हुआ। और धीरे धीरे अच्छी सर्विस, सेल्स इन्वॉल्वमेंट, आफ्टर सेल सर्विस और 24/7 अवेलेबिलिटी और ग्राउंड टू अर्थ और नो ईगो एटीट्यूड और सिंपल लाइफ जीते थे। मेरा 2000 के बाद बहुत अच्छा काम होने लगा। 2008 में थोड़ा सा चाइना का वो जो मंदी का दौर चला उसमें थोड़ा लॉस हुआ, लेकिन फिर भी मैंने इकोनॉमिकल लाइफ जिया था, तो मैं अपना पैसा बचा के रखा था, उससे एडजस्ट किया। और 2010 में मैंने बीएसटी बस का टेंडर लिया था। उसके बाद में मैंने बड़े टेंडर लेने के चालू किए, बड़े काम करने के चालू किए और बड़े बड़े फिल्मों के काम मिलने लगे, बड़े बड़े कॉर्पोरेट के काम मिलने लगे। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज की तारीख में इंडिया में पहली आउटडोर लिस्टेड कंपनी ब्राइट है। और मैंने बीबीसी का भी इंटरनेशनल काम भी किया है, जो लंदन से ऑर्डर मिला है, जो मैंने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, केन्या, साउथ अफ्रीका सब कैंपेन किए हैं। हजारों लाखों कैंपेन कर चुके हैं। और हर इलेक्शन के कैंपेन कांग्रेस, बीजेपी, मनसे, शिवसेना ब्राइट करता है। उसके सिवा 100% मतलब 90% सब मूवी, सीरियल, इवेंट, एल्बम, एवॉर्ड के काम में भी ब्राइट का नाम है। और रिसेंटली में लास्ट वीक के कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट पे भी मेरे को इनवाइट आया। ट्रम्प सर का जो यूएस में वाशिंगटन में था उनका शपथ विधि का प्रोग्राम, उसमें भी मैं गया था। और मिस वर्ल्ड से लेके फिल्म फेयर से लेके बड़े बड़े इवेंट्स, लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड से लेके लंदन पार्लियामेंट में ऐसे बहुत अवार्ड भी मिल चुके हैं। और भगवान के दया से मोदी जी, अंबानी जी जैसे जीरो से हीरो बने, ऐसे मैंने मेरा सपना देखा। और टाटा के जैसा मैंने अपना नाम क्लीन एंड गुडविल वाला रखा है। और भगवान के आशीर्वाद से एमबीए के कॉलेज में मेरा केस स्टडी है, मेरे ऊपर फिल्म बनने का भी सब ऑफर आ रहा है, बुक्स बनने की भी ऑफर आ रही है। और लाखों कॉर्पोरेट क्लाइंट मेरे को बहुत बार बोलते हैं कि हमारे लड़के को आपके साथ सीखने को भेजते हैं कि तुमने इसे स्ट्रगलिंग करके जैसे ऊपर आए। तो आज की तारीख में ब्रांड नेम, गुडविल और भगवान के आशीर्वाद और माँ बाप का प्यार और मेरा 70-80 आदमी का टीम है, बहुत बड़ा नाम है, अच्छी ऑफिस और अच्छा काम और पेन इंडिया वर्क है। और आपके आशीर्वाद से अभी जर्नी बहुत आगे निकल रही है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो अभी मैं अभिषेक शर्मा जी मेरे जो वीपी है उनको देता हूँ आगे का। Thank you, Yogesh sir, for that insightful opening address. Good afternoon, everyone present on the call today. On behalf of the entire Bright Outdoor Media Limited, I extend a very warm welcome to all of you once again. I'm sure you would have got a chance to go through our financial results and press release, which has been published and available on stock exchange already. Since this is our maiden call, I would like to share some of the key developments that in terms of financial and business performance that we have had in the last financial year. So I think all in all, I believe the year gone by has been very eventful for us, marked with several key developments. We have continued to win contracts and expand our footprints across various areas in the MMR region. Our recent acquisition of Western Railway bulk advertising right, I believe is a testament to our growth trajectory. This prestigious 60 crore contract grants us exclusive rights to develop 17,555 square feet of prime advertising real estate across Mumbai's western suburbs. This would include some of the major railway overbridges inventories, which if I were to highlight some of them, it's Kandivali ROB, which will have 2 holdings totaling 3,600 square feet. Goregaon ROB, which will have 4 holdings covering 9,600 square feet. Ram Mandir ROB, Andheri Station ROB, Vile Parle ROB. So all in all, this 17,500 square feet prime inventory is what we have, won from the Indian Railways, which is going to give us
a good revenue altogether. So this is a 7-year agreement which enables us to establish cutting-edge hoardings, including 4 advanced digital LED displays and 7 front-lit static hoardings at 11 premier sites. Okay. Additionally, I believe we have one exclusive advertising right across Navi Mumbai Metro Line, one from the city and Industrial Development Corporation of Maharashtra, which is CIDCO. This 10-year agreement encompasses all advertising spaces within stations, on pillars and along viaduct as well, covering about 85,000 square feet of advertising space. During this period, we have also launched 13 new LED billboards, because you would have seen due to the opening of new route to South Mumbai from western side, which is like extended arm of C-Link, the traffic has come down substantially. When we talk about the South Mumbai, especially the Pedder Road, the Haji Ali Junction, the traffic has come down significantly. So I think the whole focus now is towards the western suburb, which is seeing a good growth altogether in terms of infrastructure, in terms of connectivity, which is where our focus also lies. And happy to tell you that we have launched 13 new LED billboards across prime regions, prime locations in the MMR region. This adds 12,569 square feet of additional DOs to our portfolio. We have also unveiled a large digital LED hoarding at Wadi Bandar Junction, at Dadar station for that matter. We have recently launched 4 new prime digital LED billboards, which is going to give us a good, revenue. So I think all in all, it's a heartening when we look at our achievements, which are also recognized by the industry body. I'm glad to share that we have received the Great Indian IPO Game Changer title at the Great Indian IPO Summit and Awards 2024 last year. So I think all in all, looking ahead, as far as the vision, for the future, I believe is very clear in terms of expansion. We aim to expand our footprint, stepping into new markets and opportunities, especially, coming from the infrastructure growth. As far as digital integration is concerned, we are embracing embracing technology, which is to offer interactive and dynamic advertising solutions, especially focusing on digital LED displays. Another key area for us is diversification. So in this year, we also aim to diversify a little from the core business, which is outdoor. We also, plan to, bring a new team, new talented people all together, which would then be taking care of the event, which we believe event is going to give us a good traction altogether. We also plan to get into celebrity management, ad film production, in-film branding, digital and social media management, and we also plan to cover radio, TV, cinema branding, PR, all of that. So I think this additional set of services is going to give us a good additional revenue altogether. We are hoping that this is going to be in the range of around 35 to 45 CR this year, which is going to give us the additional. If I were to talk in terms of percentage, this is going to give us a good 20-25% additional revenue in the financial year. Okay, so that's on the diversification part. Also, I think sustainability remains a good focus for us. We are one of the first in the industry to implement some eco-friendly practices. We also won the Guinness Book of World Record last year for installing largest number of solar panels on our hoarding, which has received a good traction from the industry. A lot of companies, multinational companies who are equally green sustainability focused, they are coming to us actively, making sure that they use some of these inventories that we have. So if I were to talk to you about with all these initiatives in place, we are looking at a good 40 to 45% increase in terms of the overall revenues that we'll have for this year, out of which 20% is going to come from the additional set of services that we plan to start,
from next month, and seeing a good growth. I mean, in terms of the overall, industry perception is there that this year with the festivals coming up is going to be good for the overall outdoor industry per se. We also have BMC elections lined up in Mumbai this year, so which is going to give us a good traction altogether. So all in all, I think, while you would have seen that the other mediums, TV, print, radio, they are in a way not seeing the kind of growth because of digital disruption. I must say that outdoor as an industry is really complementing and is only thriving with digital, because we are giving a good support to digital medium. You would have seen a lot of times the things which are amplified, the campaigns which are amplified on outdoor medium is also getting a good traction in the social media and the digital media. So that way we are complementing digital, and we are working hand in hand with as far as digital is concerned. So I think overall per se outdoor is only thriving with digital and not getting replaced, disrupted by it for sure. So with that, I would like to hand it over to Shekhar Manjrekar ji, who is the CFO, who will take us through some of the more concrete and in detail financial performance for you all. Thank you so much. Hello. Good afternoon, everyone. I would like to highlight our financial performance for the financial year 25. Our financial journey reflected our operational excellence. The revenue from operations for financial year 25 grew up to 18.8% year-on-year to rupees 126 crores, making significant growth from previous year. This was driven by several new ad campaigns done across sectors, coupled with the higher share of LED display, which fetched a better realization. EBITDA for the year grew 15% year-on-year to rupees 26 crores, while the EBITDA margin stood at 20%. Investment in skill, workforce, and in LED display exerted a temporary pursuit on margin. Our profit after tax grew up 18.9% year-on-year to rupees 19 crores. PAT margin stood at 15%, showcasing our profitability and efficient resource management. The board has proposed issue of bonus shares in the ratio of 1:2, that is, one bonus share for every two full-up paid existing equity shares held, subject to shareholder approval. The board has also recommended a dividend of rupees 0.5 per equity share, 5% for financial year 25, subject to shareholder approval. That is all for our side. We can now take any questions. Thank you very much, sir. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and one on their touch-tone telephone. If you wish to withdraw yourself from the question queue, you may press star and two. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. A reminder to all participants, if you wish to ask any questions, you may press star and one. A reminder to all participants, if you wish to ask any questions, you may press star and one. We have a first question from the line of A reminder to all the participants, if you wish to ask any questions, you may press star and one.
We have our first question from the line of Madhur Rathi from Counter Cyclical Investments. Please go ahead. Sir, thank you for the opportunity. Sir, I wanted to understand what would be the total area or total square feet advertising space we currently have. And sir, what would be our market share in the Mumbai region? So I think you have spoken about the total market share that we have, right? And Yes, and the square feet that we offer. Square feet with 4 lakh plus square feet of advertising space available to us. Yeah. So that's there. And we are like I've mentioned about it, we are currently looking at increasing it in terms of with the new tenders that we are looking at. We have recently installed some more capacity to it, which will announce soon. We are going to make our announcement on the stock exchange about it soon. That's there. Apart from that, we are also looking at some new set of tenders, plus some of JV formation, which is going to definitely, strengthen the full network that we have in Mumbai. In terms of market share, I think there are somewhere around 3,000 good big size holdings available across Mumbai, out of which we operate somewhere around 464 inventories that we have in our city at the moment. Yeah. So with that kind of space, but the thing is that we have good all market locations available with us. So that way I can definitely say that we are in a strong position altogether. Got it. Sir, so this 4 lakh square feet, sir, is this including the 85,000 Navi Mumbai and the 17,500 contract, or is it the current one and this around 1.5 lakh will be added, this will be a separate one? Is this understanding correct? So that, yes, your understanding is correct. It's what we are operating at the moment, but with the new Navi Mumbai tender, we will definitely going to increase it by a good 85,000 square. Got it. Sir, if I'm trying to understand, this business is very high operating leverage business, where once you pay the rent and whatever lease cost and initial cost, your margin set to improve. But sir, if I look at our historical numbers, sir, our gross margin, if I just consider revenue and display charges, so they are in 65-70% range for the last 5 years. So why is that? Because it's constantly reducing for our competitor signposts. So if any comments on that? So I think when you spoke about signposts, I think the major thing goes to their digital LED displays that they have put up across the city. They operate bus shelters which are largely digitalized. So in that way also, our digital LED billboards, which we have invested investments in last year, is going to give us good traction. The whole realization is going to be achieved starting this financial year. So I think that would really put our margins in a good space altogether. Is how I look at it. Got it. Sir, if I consider our business on an overall basis, sir, what kind of margin improvement can we see over the next 2 to 3 years? And the second question would be, sir, considering this, sorry, I will ask it again, sir. Sir, on the first margin improvement, and second question would be, sir, what is the price hikes can we expect every year? You said price rise. Yes, sir. Sir, any price hike can we expect to take every year on year, sir, historically, and we can expect going forward? So the market requirement and location and price and area wise price increase and decrease possible, sir. Also, सर अभी ये साल में हम लोग ना नया जो काम करें ना, जो इवेंट्स, अवार्ड और सिनेमा और प्रेस और पीआर फिल्म, उसमें मार्जिन बहुत फैंटास्टिक है.
इवेंट्स और इसमें मार्जिन बहुत अच्छा है। वो सब नया काम भी कर रहे हैं जो एडवर्टाइजिंग के कंसर्न में है। सेलिब्रिटी में क्या है, हम लोग 2 लाख मूवी की पब्लिसिटी करते हैं और सब सुपरस्टार की लाइफ की पहली पिक्चर मैंने की है। सब सुपरस्टार, छोटे नहीं, शाहरुख, सलमान, ऋतिक वाले, इस तरह के बड़े बड़े इवेंट कॉर्पोरेट क्लाइंट भी हमारे पास लग जाता है। तो ये जो इनको सेलिब्रिटी लगती है, जैसे मान्यवर वाले को विराट कोहली या इसको अमिताभ बच्चन, कल्याण जुलूस को लगता है, तो इस तरह के जो सेलिब्रिटी है उसका जो है वो भी पीआर का भी, प्रिंट का भी और अवार्ड का भी, मतलब इसमें फैंटास्टिक मार्जिन है सर। अच्छा, तो ये मार्जिन कितना होगा सर हमारा? अभी हम जो 20% कमाते हैं, क्या ये 25-30% होगा या उससे भी ज्यादा होगा? 25 से 30% बढ़ेगा। ओके, 25 से 30% रहेगा। ओके, ठीक है। सर एक ये समझना था, एक हमारे कैपेसिटी है सर, हमारा जो 4 लाख स्क्वायर फीट का आज कैपेसिटी है सर, इसमें से अगर हम लास्ट 1 साल कंसिडर करें सर, इसमें से कितना कैपेसिटी what would be the utilization level for this capacity? And sir, every year हम कितना % प्राइस है ओवरऑल बेसिस पे? कोई शायद से हमारे अलग अलग जगह में है मुंबई में, बट ऑन ओवरऑल बेसिस सर हम कितना प्राइस है अपने कस्टमर को ट्रांसफर कर सकते हैं हर साल? फर्स्ट ऑफ ऑल ना सर, ये 4 लाख स्क्वायर फीट तो हमारा खुद का मीडिया है। हम लोग है ना 3 तरह से धंधा करते हैं। खुद का मीडिया बेचते हैं, एक एजेंसी टाइप काम करते हैं जिसमें मार्केट से होर्डिंग लेके हम मार्जिन रख के बेचते हैं। वो धंधा भी हमारा बहुत बड़ा है। तो खाली हम लोग हमारा माल नहीं बेच रहे सर। अगर कैंपेन किसी का आता है पेन इंडिया या आपके मुंबई में, तो हम लोग ट्रेडिंग भी करते हैं और एक दूसरे से साइट लेते हैं। तो उस तरह से भी बिजनेस में हम लोग एक्सपांड करते हैं। और जो 4 लाख स्क्वायर फीट है उसमें सीजन में 70-80% बुकिंग रहता है और ऑफ सीजन में 50-60, एवरेज 50 to 80% में चलते रहता है बुकिंग का एवरेज। और सर प्राइसिंग रिगार्डिंग हर साल कितना हम लोग हमारे कस्टमर को आगे प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं? तो 10% से लेके तक इंक्रीज होता है, सब्जेक्ट टू डिमांड, अवेलेबिलिटी और क्लाइंट का रिक्वायरमेंट, आईबॉल और उनका साइट की डिमांड के ऊपर रेट डिसाइड होता है और प्राइस तो रिक्वायरमेंट के ऊपर है उनकी। अगर बहुत आदमी एक होर्डिंग मांगते हैं तो रेट बढ़ जाता है, एक आदमी लेता है तो रिजनेबल में जाता है, तो वो हिसाब से मार्जिन बढ़ता है। जैसे अपने शेयर का भाव ज्यादा क्लाइंट आता है तो कैसे बढ़ता है, वो इस तरह से ही है होर्डिंग का, डिमांड एंड सप्लाई पे। ओके सर, एक बस आखिरी प्रश्न था मेरी तरफ से। सर अगर हम साइन पोस्ट को हमारा कॉम्पिटिटर अगर हम कंसिडर करें, तो सर ऐसा वो क्या कर रहे हैं जो हम लोग आगे अगले 2-3 साल में हम करेंगे जिस वजह से हमारे मार्जिन भी उनके लेवल तक चले जाएंगे और हमारा बिजनेस भी वैसा रहेगा? सर ये साइन पोस्ट के ना सिर्फ बस सेल्टर है और हमारे पास होर्डिंग्स है। तो अभी जो अमेरिका में जब छोटा था तभी गया था ना घूमने के लिए, तभी मैंने सपना देखा था कि टाइम्स स्क्वायर मुंबई में आ गए। तो अभी जो 80 एलईडी है ना मुंबई में, 80 टोटल एलईडी है, 80+, आउट ऑफ दिस 38 ब्राइट के पास है। और लास्ट ईयर होर्डिंग का एक हादसा हुआ, इसलिए परमिशन बंद थी। तो अभी म्यूनसिपलिटी ने गए महीने से चालू की है होर्डिंग की परमिशन, बस सेंटर की परमिशन चालू थी, इसलिए उनका काम हुआ है। अभी हमारा 1 महीने पहले परमिशन नया मिलना चालू हुआ है, नए टेंडर्स मिलने चालू हुए, जिसका एग्जीक्यूशन करने में रेलवे बीएमसी 4 से 6 महीना लेती है पासिंग पीरियड। तो जो पीरियड जा रहा ना उसमें गया, तो अभी महीने से स्टार्ट हुआ है। तो अभी हम लोग और एलईडी लगा रहे हैं और टाइप कर रहे हैं और जेवी कर रहे हैं। और क्लाइंट तो हमारे पास लाखों क्लाइंट है। जो क्लाइंट का डेटा है ना सर इंडिया में, जो मेरे पास है वो किसी के पास नहीं है। मैं लास्ट 45 ईयर से मेरे पास इतने क्लाइंट, इतने कैंपेन, इतने, मतलब आप किसी को भी अगर आउटडोर चाहिए ना तो ब्रांड का नाम आएगा। जैसे पानी पीना तो बिस्लरी, अमेजोन, नेटफ्लिक्स या नोकिया, अपना ये सैमसंग, एप्पल, इस तरह से ब्राइट का आउटडोर का नाम आता है तो आता है। पहले से ब्राइट आती है क्योंकि ट्रस्टेड नेम, सर्विस, रिजनेबल रेट एंड 24/7 सर्विस। तो गारंटी के साथ अभी हम लोग बड़े पैमाने में नए स्टाफ भी रख रहे हैं, नए मीडिया का बिजनेस भी बढ़ा रहे हैं और धंधा बढ़ाने के लिए मैक्सिमम ये साल में अपना 100% कॉन्फिडेंट है कि धंधा बढ़ेगा और अगर भगवान चाहे तो समझ गया सर। बस एक आखिरी प्रश्न सीएफओ के लिए था सर, हमारा लीज या रेंटल कॉस्ट कितना रहेगा FY'26 और FY'27 के लिए, कंसिडरिंग कि हमने ये मुंबई मेट्रो और वेस्टर्न रेलवे का काम लिया है?
इसमें 10 to 15% बढ़ेगा। और हेलो हाँ जी सर। तो हेलो सर हमारा रेंटल कॉस्ट कितना था इस साल? FY'25 में हमारा रेंटल कॉस्ट कितना था? रेंटल कॉस्ट मैं आपको डिटेल में आईआर के साथ शेयर करूँ ऑफलाइन। हाँ जी सर, चलिएगा। सर धन्यवाद मेरे प्रश्नों का जवाब देने के लिए सर, शुक्रिया। Thank you. Thank you. A reminder to all participants, if you wish to ask any questions, you may press star and 1. We have our next question from the line of Sagar Shah, an individual investor. Please go ahead. Hello, am I audible? Yes. Yeah. Thank you, sir, for the opportunity. First question is on the geographical mix and the geographical reach the company has. So, just wanted to know what is the percentage of revenue that comes from outside Mumbai, or do we have any plan? So, even 100% revenue comes from the within Mumbai. So, do we have any plan to reach our to expand to other areas outside Mumbai? Okay, so happy to tell you answer that. As far as our own inventories are concerned, so our inventories are primarily based out of Mumbai, Navi Mumbai and Thane. So this is where we have our own inventory. But like sir spoke about his thing earlier, that geography is not a barrier for us. We are working not only in India but beyond as well. So we have seen from that because we have strategic tie-up with various media owners across India and beyond as well. So revenue from outstation, if I were to talk to you about that, has seen a good growth altogether. Last year, then 4% of our revenue, I mean 4% of our overall outdoor media revenue came from the outstation business, yeah, which we plan to, which we aim to increase this year with some more, strategic collaboration, long-term collaboration. So I think it's going to grow for sure. सागर भाई मेरे को एक बात बताना था इसमें और भी कि मुंबई में अगर जो इंडिया में स्पेंड होता है ना, अगर 100 रुपया, तो मुंबई में 40 रुपया स्पेंड होता है आउटडोर का, और बाकी मेट्रो सिटी है ना, दिल्ली, बेंगलोर, उसमें 60 रुपया डिवाइड होता है। तो मुंबई का स्पेंड ज्यादा, और हमारा मुंबई में मोनोपोली और बहुत जगह पे प्राइम लोकेशन पे एक्सक्लूसिव टोल राइड भी है। तो मुंबई का धंधा इतना बड़ा है ना, ये मुंबई का सबसे बड़ा, जैसे आप इनकम टैक्स में, सेल टैक्स में, जीएसटी में भी देखते हो कि मुंबई का रेवेन्यू बहुत ज्यादा है कंपेरेटिवली गवर्नमेंट को भी। Okay, great. Just Mumbai is focus for us, but we are looking at other markets as well. But Mumbai is where we feel there's a whole lot of potential out there which can be tapped further. Oh, great. So second question on the same on the earlier line as well, which earlier participant asked about the capacity that we have of around 4 lakh square feet. So you mentioned this is not our existing capacity, so this is bifurcated between agency and all. So can I know the split between what is our own capacity that we have or lease capacity? So the 4 lakh square feet that we spoke about is our own capacity. I mean, this is like we have the exclusive right, display rights, selling rights for these, for 4 lakh of square feet that we spoke about. बाकी ट्रेडिंग करते हैं पूरा, बाकी भी लोगों से होर्डिंग लेके ट्रेडिंग करते हैं। हमारे पास क्लाइंट है, मेन है ना, जैसे अगर किसी को फिल्म बनाए तो उसके पास स्टार रहना चाहिए, सेलिब्रिटी, तो फिल्म बनती है। तो वैसे मेरे पास है ना क्लाइंट है, तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती है, तो जिनके होर्डिंग्स रहते हैं उससे हम लेके देते हैं, ट्रेडिंग करके देते हैं, उसमें मार्जिन मिलता है, उसमें रिस्क भी नहीं है कुछ और मार्जिन मिलता है ट्रेडिंग करने का। So any future plan to increase its existing capacity, or it is good enough for next 1 or 2 years? No, of course, like I mentioned, sir, to the earlier, participant, then we definitely plan to increase this capacity. We have identified certain prime locations, and the work is in progress. And the additional, the Navi Mumbai thing that we spoke about, that's going to give us additional capacity of 5,000 square feet altogether. So that's been there. And like I said, we are actively looking at other tenders, other
key sites. Our team on the ground is continuously identifying such new locations, such new sites. So we definitely aim to increase it, by good percentage this year. सर लास्ट एक साल से बीएमसी ने परमिशन बंद किया हुआ है, जो एलईडी की परमिशन अभी चालू की है और होर्डिंग्स की परमिशन अभी भी बंद है एक साल से, जो सून अभी बारिश के बाद चालू करने वाले हैं। तो बहुत से नए होर्डिंग जो आएंगे ना, तो हम लोग बहुत से होर्डिंग खरीदते भी लोगों से और ट्रेडिंग भी करते हैं और हम लोग सर्कुलेटिंग भी करते हैं। मैं 40 साल से 45 से सब होर्डिंग चला रहा हूँ लोगों को। तो उसमें जैसे नई साइट आएंगे ना, तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी होगी बॉम्बे में। अभी परमिशन बंद है, बिकॉज एक वो इंसिडेंट हुआ ना, उसकी वजह से परमिशन बंद रखा है थोड़ा। Okay, okay. Sir, last question on the real estate front. So I missed the earlier commentary about the real estate segment. So just wanted to know your contribution from the real estate business or any further plan you have to increase this revenue contribution of real estate business. Can you throw some light on this part of the vertical? Sorry, I missed the earlier commentary. Sorry for that. Hello, am I audible? यस हेलो। हाँ सर, रियल एस्टेट बिजनेस में हम लोग ना जो हमारे पास इन्वेंटरी है, जैसे हम लोग किसी के साथ एडवर्टाइज कैंपेन करते हैं, तो उसके बदले में हम लोगों को फ्लैट ऑफर किया जाता है। तो इधर कैश और फ्लैट, वो दोनों के बीच में हम लोग फ्लैट अगर लेते हैं तो वो हम लोग इन्वेंटरी में करके उसको हम लोग रियल एस्टेट बिजनेस में कन्वर्ट किया है। और उसका जो जितने भी फ्लैट है, उसका जो हमारे पास रेंटल इनकम आता है, वो भी रियल एस्टेट से रेंटल इनकम हमने जनरेट किया है। So what is the current inventory level that you have which is unsold? अराउंड 29 करोड़ का जो रियल एस्टेट इन्वेंटरी है। And this amount will be realized with this year or it will realize within 1 or 2 years? Actually ये रियलाइज होगा। हम लोग ट्राई करते हैं एवरी ईयर। तो अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 22-23 में हमने 2 करोड़ 50 लाख का रियलाइजेशन किया था। 23-24 में अराउंड 66 लाख का रियलाइजेशन किया था। और ये साल अभी तक कुछ हुआ नहीं है, बट ट्राई करेंगे। Okay, thank you sir for asking all the questions. That's it from me. रियल एस्टेट में हम क्यों ये बता रहे हैं, रियल एस्टेट का रीजन क्या है। हमारे पास है ना होर्डिंग, समझो मेरे पास 400 होर्डिंग है एग्जाम्पल, और मेरे होर्डिंग कभी 200 खाली देते हैं। तो हम खाली होर्डिंग है ना रियल एस्टेट वाले को दे देते हैं पर डे में, 9 डेज गारंटी में। तो उसके साथ है ना मेरे को प्लेटिनम करके कंपनी से 4 फ्लैट मिल गए, तो कम से कम मेरे को 7 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आ गया। जो अभी मैंने पास 7 करोड़ का फ्लैट पड़े, जो मैं ये साल अभी बेचने को निकालेगा। तो मैंने खरीदा तभी 7 में था, अभी उसकी 10 करोड़ वैल्यू हो गई है। तो इनकम भी होगी और वो सब ब्राइट कंपनी में है सर। तो कंपनी को रेवेन्यू बढ़ने वाली है। ये जो रियल एस्टेट है ना, ये लास्ट बहुत सालों से 2-4, 5-6 तरह से लिए हुए, जमा किए हुए हैं। हेलो, Thank you sir. That's it from my end. Thank you. A reminder to all participants, if you wish to ask any questions, you may press star and 1. We have our next question from the line of Akash Sharma, an individual investor. Please go ahead. Yeah. Hi, sir. So I have a few questions. First, I wanted to ask, what is our investment plans going forward? In outdoor, sir? Yeah. Sure, anything. So we are open for anything. And जो भी अच्छा अपॉर्चुनिटी आएगा, जैसे कोई बड़ा टेंडर एयरपोर्ट का आएगा। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर मुंबई में बहुत बढ़ रहा है सर, समृद्धि हाईवे चालू हुआ, फिर अपना एयरपोर्ट नए बन रहे हैं। तो अगर कोई बड़े टेंडर्स भी आएंगे तो वी आर ओपन फॉर दिस एनी टाइप ऑफ टेंडर, जो पूरी गेम चेंज कर सकती है हमारी। और मेरे पास फंड भी है, प्लस मेरे को बैंक ने भी 60 करोड़ का लिमिट भी दे के रखा है, अगर मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी आती है तो क्योंकि मेरे इतना ट्रस्ट है बैंक का कि वो लोग ने मेरे को ब्लैंक ओपन ऑफर भी देके रखा है। तो अगर अभी टेंडर थोड़े स्लो हो रहे, अंडर कंस्ट्रक्शन सब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सब चल रहा है, जैसे खुलेगा तो हम बड़े बड़े टेंडर्स भी लेने वाले हैं। या कोई कंपनी एक्वायर करने का आएगा, छोटी छोटी कंपनी, या साइट खरीदने की आएगी, या किसी के साथ जेवी करने का आएगा। एवरीथिंग वी आर ओपन टिल एनी अमाउंट। Okay, sir.
And sir, if I'm not wrong, we are also entering into online and digital space. सुन, Yes, yes, that's correct. 7 जुलाई से नई टीम आ रही है जिसमें हम प्रिंट, रेडियो, इवेंट्स, अवार्ड, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स मॉल, PR, सेलिब्रिटी और डिजिटल का नई टीम 10 आदमी की रखी है जो ये लाइन में 25 साल से काम करते हैं, एक्सपर्ट CEO और सब रखे हैं, जो मेरे को मिनिमम मेरे अभी करंट रेवेन्यू का 20 से 25%, 30% का ग्रोथ देगा विद फैंटास्टिक प्रॉफिट. Okay. And sir, what would be our investments for this line? मैक्सिमम 5 to 10 करोड़ मैक्सिमम. लेकिन मेरे घर से ये सब इन्वेस्टमेंट नहीं है क्योंकि मेरे को सामने भी क्रेडिट मिलता है सर. प्रिंट में 3 महीने क्रेडिट मिलती है, रेडियो में मिलता है, सेलिब्रिटी में तो ऑन द स्पॉट एडवांस देना पड़ता था, क्लाइंट भी एडवांस देता है सेलिब्रिटी का. जैसे एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन सर खाली एक दिन का शूट का 6 करोड़ रुपए लेते हैं सर. अगर 15% भी कमीशन हम लोग को मिलता है तो कुछ करने का चलिए इंट्रोड्यूस करा के देने का उनको दोनों को, बस क्लाइंट को उनको. Okay, sir. And lastly, sir, what is our going forward return on equity or return on capital employed? One second, sir. Yes. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 0.11% पे है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 16%. Okay. हाँ, Thank you. फॉर फाइनेंशियल 25 और ये सस्टेन करने के लिए हम लोग ट्राई रखते हैं. Okay. Perfect, sir. Thank you. That's it from my side. Thank you. थैंक यू. We have our next question from the line of Madhur Rathi from Counter Cyclical Investments. Please go ahead. Sir, thank you for the opportunity once again. Sir, I wanted to understand regarding the digital outdoor business. Sir, what is the margin we earn on the hoardings that are owned by Bright Outdoor, and what is the margin we earn on the trading business? So what would be the margin of these two differential? 1 minute. डिजिटल ट्रेडिंग बिजनेस में अप्रोक्सीमेटली 10 to 15% मार्जिन रहता है सर. और ट्रेडिंग बिजनेस हमारे टोटल रेवेन्यू के अराउंड 20 to 22% का बिजनेस रहता है. और डिजिटल LED टोटल रेवेन्यू में 20% का कंट्रीब्यूशन करता है और इसमें मार्जिन अप्रोक्सीमेटली मतलब 20-25% का मार्जिन डिजिटल LED में आता है. और सर इसमें ना बढ़ने का चांस क्यों है सर? क्योंकि LED की परमिशन है ना अभी 1 महीना पहले मिली. लास्ट टाइम भी 1 साल पहले थोड़ी LED लगी थी, अभी मिलने लगी तो फैंटास्टिक LED भी बढ़ेगी हमारी. ओके. और सर जो हमारा हाँ जी सर. और सर जो हमारा नॉर्मल फिजिकल होर्डिंग बिजनेस है सर, उसमें क्या मार्जिन हम निकाल पाते हैं? अराउंड 10 to 15% मार्जिन निकलता है उसमें. और ये साल LED की वजह से थोड़ा इंक्रीज हो गया है तो 20% पे चला गया है. ओके. सर तो ट्रेडिंग बिजनेस में और ये फिजिकल होल्डिंग में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है हमारे मार्जिन में, क्या ये सही है? ट्रेडिंग बिजनेस में ये फिजिकल होर्डिंग में मतलब डिजिटल जो हाई मार्जिन बिजनेस है, अगर मैं उसको छोड़ दूं तो जो हमारे खुद के होर्डिंग्स है फिजिकल या फिर सिर्फ एक डिस्प्ले पिक्चर वाले, उसमें और ट्रेडिंग बिजनेस में ज्यादा मार्जिन का अंतर नहीं है, राइट? ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है मतलब कौन सी कैंपेन के लिए हम लोग ले रहे होर्डिंग खरीद कर रहे हैं उसके लिए मार्जिन तो रहता है. अपना जो इन्वेंटरी है उसमें थोड़ा मार्जिन ज्यादा रहता है और जो ट्रेडिंग में रहता है तो उसमें डिपेंड करता है कि हम लोगों को कौन से ज्योग्राफिक एरिया में हमारा प्रेजेंस नहीं है, वहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं. ओके सर. सर ये समझना था, आपने ये बताया कि BMC पहले 1 साल से परमिशन नहीं दे रही है और अभी मॉनसून के बाद देगा,
तो सर इस वजह से क्या हम मार्जिन और प्राइसिंग जो है सर क्या इस पे अफेक्ट आ सकता है? मतलब सिर्फ ब्राइट के लिए नहीं, पूरे मुंबई होर्डिंग की बात कर रहा हूँ सर। इसमें कुछ प्राइसिंग प्रेशर या मार्जिन प्रेशर हमें ऐसा लगता है हो सकता है? नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सर। क्लाइंट तो नए नए रोज आ ही रहे। अब जैसे हजारों लाखों बिल्डिंग बन रहे हैं, हजारों नए धंधे चल रहे, हर एक का धंधा चले रहा है। नए होर्डिंग आने से तो उल्टे का अच्छा रहेगा, क्लाइंट भी बढ़ रहे हैं। पहले जैसे सोशल मीडिया इतना खुद डिमांड वाला है, तो भी सर हमारे होर्डिंग जो है 24/7 लार्जर देन लाइफ है। आप फेसबुक देखो, ट्विटर देखो, इंस्टा देखो, इवन कोई सीरियल लॉन्च होती है तो टीवी चैनल खुद एक बहुत बड़ा मीडिया है। खुद टीवी चैनल के सब सीरियल के पहले होर्डिंग्स लगते हैं। फिर अपने ओटीटी के, अभी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के, कंस्ट्रक्शन के बहुत नए बिल्डिंग आ रहे हैं, प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो प्रोजेक्ट बढ़ते जा रहे हैं, क्लाइंट बढ़ते ही जा रहे हैं, तो होर्डिंग बढ़ेगा तो मार्जिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। ओके सर, हमें कोई आइडिया है कि जो 3,000 होर्डिंग अभी है मुंबई में ये कितना बढ़ जाएगा अगले 1 या 2 साल में बेस्ड ऑन बीएमसी परमिशन? 500, 1000, 2000 बढ़ेगा ना, मैक्सिमम 1000। ओके, 1000 से और एलईडी बढ़ेगी तो एलईडी में फ्लोट 6 रहता तो एलईडी का थोड़ा बढ़ेगा। ओके, एलईडी में ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। एकदम पहले ना सर, एकदम पहले 3,500 होर्डिंग मुंबई में थे, बहुत पहले। फिर बाद में तो मेट्रो और ये सब आ गया तो बहुत से होर्डिंग कर गए और निकल गए। तो आज की तारीख में बीएमसी के पास कुछ 1,000-1,200 होर्डिंग है और 1,000-1,200 होर्डिंग रेलवे और अदर एरिया में है। तो अभी ये परमिशन मिलने के बाद सब बढ़ेगा। ओके सर, सर ये मेरे क्वेश्चन थे सर। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। Thank you. Thank you. We have our next question from the line of Parth Patel, an individual investor. Please go ahead. Hi sir, am I audible? Yes sir, yes sir. Yes, thank you for the opportunity sir. जय जिनेंद्र। मुझे 2-3 क्वेश्चन थे खाली। जैसे आप बता रहे थे डिजिटल में वी हैव अराउंड 36 होल्डिंग अभी एलईडी के, तो थोड़ा बता सकते हो कि डिजिटल और स्टैटिक में क्या स्प्लिट रहेगा अपना, कि मुंबई में और ओवरऑल इंडिया अपना कितना स्टैटिक है और कितना डिजिटल में है एक्स्ट्रा? Okay. So, Pati, I mean, it's a nice question that you've asked. But I must tell you, ये जो digital LED displays हैं, like I said, अब overall अगर आप देखेंगे कि अगर numbers को हम देखें तो overall 3,000 plus holding जो मुंबई में है, उसमें सिर्फ 80-85 holding जो है वो digital हो पाए हैं, है ना? Why? Because there's a large, huge capex involved. In this business, to put up a hoarding of this size, this scale, LED hoarding, to convert a normal hoarding to a LED hoarding, it requires a good capex cost, plus like sir spoke about the permission as well from BMC, from traffic and all of that. Keeping that in mind, I think this is still going to be a slow transition for sure, but yes, the transition is happening, things are changing, and I think overall per se we are on the right direction. And like you mentioned, out of 80-85 LEDs that we have in Mumbai overall per se, at Bright, we own 38 of them, and this number is also increasing. This is going to increase this year as well. So we aim to increase this number substantially, and we are in a way committed to expand this business further. Got it. And so स्टैटिक होल्डिंग में ना एक टाइम पे एक ही एड लगती है, लेकिन डिजिटल में एक टाइम पे 6 एड लगती है। 10-10 सेकंड का 1 मिनट में 6 स्लॉट आता है, तो 6 क्लाइंट की एड आती है। तो रेवेन्यू मल्टीप्लिकेशन में 6 टाइम होती है। बिकॉज ऑफ 1-1.5 साल से परमिशन कम होने की वजह से डिजिटल बढ़ी नहीं है। लेकिन अगर डिजिटल बढ़ेगा ना तो खाली लाइट का बिल एक कैपेक्स में एक ही वन टाइम कैपेक्स में 1 करोड़ 50 लाख to 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है वन टाइम, लेकिन उसके सामने 6 टाइम्स की रेवेन्यू है हर 1 मिनट में। उसके सिवा खाली लाइट का बिल 1 लाख से लेके 2 लाख रुपया अप्रोक्सीमेटली पर मंथ मीटर का आता है, खाली एक्स्ट्रा एक्सपेंस। और लैंडलॉर्ड थोड़ा बढ़ाता है पैसा, लेकिन रेवेन्यू फैंटास्टिक बढ़ती है अगर डिजिटल एलईडी बढ़ेगा तो। गॉट इट। और आई वाज आस्किंग कि टोटल नंबर ऑफ स्टैटिक होल्डिंग कितना है अपने पास?
हमारे पास सर कुछ 180 या 200 के 180 या 200 होर्डिंग का सेटिंग 180 तक आई थिंक है और बाकी एलईडी है। एलईडी में 6 लोट है। Got it. तो अनदर क्वेश्चन आई हैड अभी डिजिटल स्टैटिक में तो उसका प्रिंटिंग कॉस्ट और ये सब भी आता है, डिजिटल में ऑल ऑफ दैट इज सेव। तो ओवरऑल मार्जिन डिजिटल का बेटर रहेगा कंपेयर टू स्टैटिक? प्रिंटिंग का कुछ बड़ा नहीं, तो 10 रुपया फुट 15 रुपया फुट आता है, तो कोई हजारों में आता है, 5,000 15,000 रुपया, तो बड़ा नहीं है। एलईडी में नो डाउट कोर्स रहता है सर। वंस अपॉन ए टाइम पहला मेरे पास मुंबई में 3,500 होर्डिंग में से 15 होर्डिंग ब्राइट के पास था। 15 होर्डिंग बिफोर कोरोना। तो आफ्टर कोरोना हमने क्या स्ट्रेटेजी चेंज किया कि फिक्स होर्डिंग रखते हैं तो अपना रेंट भरना ही पड़ता है, बिके नहीं बिके। तो अभी क्लाइंट का रिक्वायरमेंट आता है तो हमको मार्केट माल गुडविल पे ब्रांड पे सस्ते में मिल जाता है, तो ट्रेडिंग में ज्यादा फायदा होता है। ट्रेडिंग मोड पे गए कि रिस्क कम हो गया, इन्वेस्टमेंट कम है और इनकम फिक्स है। मतलब लिक्विडिटी काफी हो गया फिर। इफ वी रिड्यूस फ्रॉम 1500 to 200 odd, so the liquidity increased quite a bit for us. वो 1500 होर्डिंग्स में लोगों की चलाने को लिया था, मतलब मैं ट्रेडिंग करता था 25-25 साल से। वो बीच में कोरोना में क्या रखे थे तो भी रेंट देना पड़ता था सबको ना, फिक्स रखे 12 फिक्स रहता था, तो छोड़ दिया तो रेंट बंद हो गया ना, तो रेवेन्यू मतलब लॉस बंद हो गया ना मेरा। बस ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, तो वो पूरा कॉन्सेंट्रेशन अभी क्वालिटी इन्वेंट्रीज पे है। तो जितना अभी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वी आर मेकिंग श्योर दैट ऑल द इन्वेंट्रीज आर एट प्राइम लोकेशन, है ना, लोकेशन बढ़िया हो सबका, एक स्ट्रेटेजिक जंक्शन पे हो जहाँ पे विजिबिलिटी, हाई विजिबिलिटी एरिया में हो, डेंसिटी जहाँ पे ट्रैफिक की ज्यादा हो। तो इस तरह के कुछ स्ट्रेटेजिक डिसीजन के साथ में सर हमने वी आर फोकसिंग ऑन दी क्वालिटी एज ऑफ नाउ रादर देन क्वांटिटी। With the focus in mind. Makes sense. And my final question is that majorly we are based out of Mumbai only. So do we have plans for other tier 1 cities like Delhi or Chennai? तो सर हम लोग कैंपेन करते हैं, हम पैन इंडिया कैंपेन करते हैं और वेलकम कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम जाएंगे सर। अभी मुंबई से नवी मुंबई में भी गए तो आप मुंबई में जाने को तैयार है। Got it. But then that will majorly be trading rather than buying our own. मीडिया अच्छे रेट में मिलेगा। ट्रेडिंग तो चल ही रहा है सर, जैसे हमने बताया ट्रेडिंग तो हम काफी सालों से कर ही रहे हैं। तो बट वी आर लाइक राइटली मेंशन, वी कीप लुकिंग एट सच अपॉर्चुनिटीज, वी कीप इवैल्यूएटिंग देम। तो कहीं ऐसे जब बढ़िया अपॉर्चुनिटी आता है सर तो वी आर ओपन टू सच डिस्कशन। Got it, sir. Thank you so much, and I wish you all the best for the future, sir. Thank you so much. Thank you. A reminder to all participants, if you wish to ask any questions, you may press star and 1. We have our next question from the line of Nimesh Pandya, an individual investor. Please go ahead. Hello, am I audible, sir? Nimesh, are you there? Hello, am I audible, sir? You need to be a little louder, Nimesh. Hello, am I audible? Yeah, now we can hear you. Thank you for giving me this opportunity, sir. My first question is, what is our client retention rate and what % of revenue comes from the top 5 to 10 customers? This is actually confidential data for the client details because his computer also there. So we'll one-to-one we can answer this. Okay, sir. So if I one can give that much business, then it may be a problem for us. Okay, got it. Retention rate, sir, speaking about retention rate, sir, I think we can definitely talk about it, which is around 60.22% in the precise for 24-25 that we have seen in terms of retention of the client. Okay, sir. So my next question is, can you give me the overall industry size and the market share of our? So the overall industry size is somewhere around 3,600 crores roughly. Yeah, so that's the overall all India outdoor if I were to talk to you about. So that's the industry size which is growing at the rate of 8 to 10% per year.
That's the kind of growth that we have seen in the last 2-3 years, especially after COVID. This is really doing well in terms of medium. I mean, I spoke to in my earlier thing, I spoke to you about how other mediums, print, TV, radio, they are performing vis-a-vis digital. So I think this outdoor as a medium has shown a good traction altogether, and really complementing the whole digital effort, which is currently occupying 60% of the advertising and marketing spend. So I think in the numbers that we have seen, it is showing 8 to 10% growth in this market, out of which 30 to 40% is being contributed by Mumbai alone, as Sir spoke about, spoke to you about. And we are one of the leading players, as far as Mumbai market is concerned, with some of the prime inventories, especially on the LED side that we just spoke to you about. So I think we are really, all in all, our outlook for this year also looks good for us. Okay, sir. Thank you. That's it from us. Thank you. Ladies and gentlemen, that was the last question for today, and I now hand the conference over to Mr. Yogesh Lakhani for closing comments. Over to you, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much कि आपने मेरे को इस मौका दिया. Thank you. और बहुत अच्छा लगा है. Once again, on behalf of the entire Bright Outdoor Media team and everyone in house here, let me once again thank each one of you for taking time out and joining this call today. As I said, last year was really eventful for us, and the year, this financial year also looks strong and robust, so to say, because of the overall economy that, as a nation, I think we are in a good space altogether. So is advertising and marketing industry. We are looking ahead for a good festive season altogether, and of course, like you said, DM selection and other things which are lined up is going to give us a good ROI for the kind of investment that we have made in. If last year was the year for investment, was the year of investment for us, I think this year we are going to realize a lot of it from the kind of investments we have made. So all in all, Bright Outdoor is here to shine even brighter in the fiscal year that we are in. With the kind of social, I think overall, I would also like to touch upon the social aspect of it and the kind of efforts. We are also making sure that we are also contributing to the CSR efforts, so to say, which is where we have a lot of activities going on in terms of kidney dialysis hospital, in terms of new library which is coming up for the underprivileged kids, and the kind of blood donation drive, the kind of food donation drive which is going. So we are also making sure that we are contributing well from our side on the CSR front. So all in all, the future looks bright for sure. Thank you so much. Thank you. On behalf of Bright Outdoor Media Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines.